In this pandemic era, opportunities in terms of vacancies really comes. And as soon as the opportunity comes, people around us start spreading the negativity. Yes guys, जैसे ही कोई वैकेंसी अनाउंस होती है, so we start discussing of बैंक और कंपनी जो कि वो वैकेंसी रिलीज करती है कि ये जो बैंक है, ये कंपनी है, इज दिस प्राइवेट, इज दिस गवर्नमेंट, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट and what about the coming future of that particular bank या फिर company. Hi friends, my name is Akash Shukla. I welcome you all on this YouTube channel. I am your educator at Entry App. So guys, we'll be discussing about NIACL AO. Is this a private company? Is this a government company? If this is a government company, then it will be private very soon or not, because some of the students commenting on my YouTube videos ki never go with NIACL AO post because NIACL is going to private very soon. So guys, I'll be giving complete clarification on this. So friend, first of all, let me tell you ki what is NIACL, New India Assurance Company Limited. So guys, you know that ki NIACL is Union Government Company. It is incorporated on 4th December 1906. So yes guys, it's completely government undertaking company. This company's authorized capital guys stands at rupees 20,000 lakh, whereas 50% paid up capital which is rupees 10,000 lakh also company has. And if we talk about the profit and loss for that company, so guys, it is a profit making company. Talking about the March 2019, so guys, this company shown us 579.79 crore rupees profit, whereas in March 20 the net profit was 1417.75 crore, whereas in March 2021 the net profit was 1604.69 crore. So guys, you can see here that the profit is gradually being increased. So guys, it's a profit making company. And what are the conditions when a bank or a company gets privatized or gets bank corrupt? वो कब होता है? जब एनपीए परफॉर्म करना बंद कर देता है, जब वो बैंक करप्ट हो जाती है. एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो एसेट जो कि परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, या कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से दैट कंपनी और बैंक बियर्स लॉस अ लॉट. सो दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर बैंक या कंपनी जो है वो बैंक करप्ट हो जाती है या फिर प्राइवेटाइज हो जाती है. So these are some reasons. Just because of that, a government company gets converted into the private company. Talking about NIACL, so guys, NIACL showing a very good profit for the last 3 to 4 years, guys. So there is no any matter कि that company will get privatized very soon or not. So guys, ये कंपनी अभी प्राइवेटाइज नहीं होने वाली. इट्स अ कंप्लीटली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी. ये कंपनी क्या है, डे आपका ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है प्रॉफिट. So obviously government is very happy with the profit that is shown by the NIACL. I hope you guys got reply of your question कि NIACL is a government company or the private company. Will this company be private very soon or not? So guys, stop spreading the negativity among the aspirant. Whoever you are, मतलब जो भी आप लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोस पर या जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि दिस इज अ प्राइवेट कंपनी. सो गाइज, दिस इज अ रियल फैक्ट. दिस इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी और ये प्राइवेट नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉफिट शो कर रही है. सो गाइज, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू दिस वीडियो. दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एग्जाम. गाइज, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.